I think it's started. Hi guys, welcome to High Entropy, and it's day 63 of DSA learning, and today I'm starting it very early. For me, it's very early. Like it's been long time when I started streaming early in the morning, and I think it's very bad. The streaming won't go smooth. I think so because I see here it's bad. Let's see how it goes. But yeah. Oh, what the heck, bro? Why are you not big time player? Just give me a minute, guys. I'm just about to not, not, not. My notes is ready. My notes is ready or no? Notes are ready? No, are ready. Solve it on paper. Okay. Day 63 DSA using Python. Okay. By the way, let me see if it's working, going great. DSA using Python. Okay, let me write down. Hi guys. Okay. Welcome, by the way, to High Entropy. Let me see if it's working, going great. Please let me know your opinion. DSA using Python. Okay, let me write down. Opinion. Hi guys. Oh, okay. Welcome. By the way, so let it. I don't want to keep it running, but I want to set up something where I can just see the messages if someone is pinging. I will explore it further. By the way, so take you forward. Let's jump and without wasting time, because let me put the timer clock, and our goal is simply 2 hours of intense practice. Because I'm targeting, like if I'll do till 2 hours, it will be 110, and after that I'll cook something and I'll have, and then what I'll do after that, I will work on my office work. What I'll say. Let's begin, bro. I have other things to do that I'll do later. Okay, so we are solving the LCS longest common subsequence. So yesterday I solved one problem, and today we are gonna solve the second, where we need to print the LCS, longest common subsequence. DP on a string we have jumped. So I hope solve. So the thing is, okay, this question wasn't here available. Print longest common subsequence. I think it will be available in the leak. No, it's they are defaulting it to this previous problem only. No problem. We'll solve somewhere else. Oh god, this is also where we need to just provide the. So what are the other options? Like I wanted to solve it.
somewhere. Okay, it will work here. I need to log in. I think I never logged in. No, I logged in. Actually, in the past, I purchased the course often when I of the coding ninja when I was in college, and still I'm dumb. Oh, I did I solve it in the past? Forget about it. Whatever I did, it's in C++. Now I'm Python guy. S1, S2, S1, S2, and N and M. So simply our goal is to, instead of storing the count, we can store this. So idea is simple. We have given, oh, what happened? S1 and S2. These are two strings, let's say A, B, C, and X, Y, C, and let's say X, B, C. So here the common LCS maximum will be PC. Okay. Now the thing is, no, nothing is thing. So we need to return maximum string. So what we'll do, we'll create a function. I mean, idea is simple. We will start exploring from the last element, from this, and if something is matching, we will say, okay, what we'll say, bro, just provide me result for the previous one. Okay, and what I'll do, previous result plus, you can say I will concat this C. Okay, and if you are not getting, if this is not matching, then you will say, okay, provide me previous result from this when you are taking this, and from this when you are okay. So you have two options, either consider this one and till here, or you will say, okay, another thing is, okay, so you have two options. One is you will pass like ABC and XB, or ABC, not ABC, AB and XBC. So these are the two options you will pass. So you will say option 1 you will get result, and option 2 you will get, and then you will consider max length. If it is having max, then you will consider this. If it is having max length, the bigger one you will consider. If both are having same, then you can consider anyone. Okay, so what we do, first thing, in memory we'll have to store the string. Yeah, string, and we need to calculate length of each time. So what we'll do, I will write it down. I already did it, but sometimes we have M, we have N, we have S1, we have S2. These are the things. We will pass memory as well. Okay, now we'll say pro. This is a function. So what happens if one of the string has 0 length? That means now you cannot get further common character between these two strings, right? So you will say if m equals to 0 or n equals to 0, if length of any of the string s1 or s2 is 0, then simply return blank string. Instead of returning 0, you will return blank. Here I'm just keeping blank. You will say it's like this. If this is not the case, then what are the? Simply you will check if memory of I. But I'm wondering, what will I store in the
If store blank string, it will be treated as a result, right? Mem of I know. In Python, you can do like you will store something that is not acceptable. You can say -1, and that means you can say, okay, this value is not -1. That means you can store anything, but heterogeneous data. But if we are in the C++ or any other language, then what? I think there will be performance, like you are changing the data type, right? Every time. Memory of m and n equals to not equals to -1. I hate it, man. This power and all. Okay, now I think it's better. At least for me, it's looking better. If memory, okay, then we can store return mem of m and n. Else, what will they say? If s1 of m minus 1 equals to s2 of n minus 1, this means last element is matching. So you will say result, or you can say result will be nothing but a function m minus 1 n minus 1 and all other stuff plus you will concat. So you can use concat like a, you will say s1 f string s1 of m minus 1, you can use anyone, and mem of mn result return result. But I just have one thing, one doubt. Else we don't need to take else, we can write it directly op1, where you'll say f1 fun m minus 1 taking n minus n will remain same, this option 2 n n minus 1 and so on. If len of op1 is greater than equals to len of op2, if length of op1 is greater than length of op2, then you will say result will be op1 and mem m and n will be op1, else mem okay, you are doing this, result also will be op2 and return result, done. So I am just thinking what else we can do. How to define, everything looks good, but only the thing is I want something to store in the array that can be acceptable everywhere, not just specific to Python. Default value, if I'll keep something like, my array is also very bad. If I'll keep this, then blank could be result of something, so I cannot keep it.
So what okay, let's learn it. Let's watch video first to get what else we can fill here. Let me think more. If I'll store any other data type, we need maximum, right? That means we need minimum something. $46 dynamic programming. हाय आज से हम Hi, लोग bro. डायनेमिक प्रोग्रामिंग स्टार्ट करेंगे। काफ़ी अच्छा टॉपिक है। काफ़ी जो हाई पैकेज की कंपनी आती है ना, काफ़ी इनकम देती है अपने को और डायनेमिक प्रोग्रामिंग ही पूछती है। Top down longest common इसकी मेरे कॉलेज में subscribe. सबसे पहले आई थी न्यूटेनिक्स, 22 बेस था उसका बेस सैलरी। हाय अगेन। हम लोगों ने एलसीएस डिस्कस कर लिया अच्छे से और लॉन्गेस्ट कॉमन सबस्ट्रिंग कर लिया, राइट। हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम है प्रिंट एलसीएस बिटवीन टू स्ट्रिंग। सो अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग एलसीएस दो स्ट्रिंग के बीच में उसकी लेंथ प्रिंट करानी थी, राइट। क्या प्रिंट करानी थी? लेंथ। अभी हम लोग को एक्चुअल जो एलसीएस है ना उसको प्रिंट कराना, मतलब जो स्ट्रिंग अभी आई थी वो प्रिंट करानी। तो अपना फ्लो क्या रहेगा बनेगा वो देख लेते हैं। प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखेंगे हम लोग, फिर हम आइडेंटिफाई करेंगे कि किस पे बेस्ड है इसका प्रिंट क्वेश्चन कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, एंड देन वी विल गो डीपर इनटू द एलसीएस, राइट। वी विल सी हाउ एलसीएस वर्क एग्जैक्टली, राइट, एंड देन वी विल ट्राई टू राइट द कोड। ओके, सो प्रॉब्लम स्टेटमेंट देख लेते हैं। प्रॉब्लम स्टेटमेंट सिंपल है। ये अपने एग्जांपल्स में भी दिया था, एक स्ट्रिंग रखी ए, एक स्ट्रिंग रखी बी, एंड देन इसमें अगर अपन देखें तो पहले लॉन्गेस्ट कॉमन सबसेक्वेंस निकालनी है। तो ए कॉमन है तो इसकी लेंथ प्रिंट एग्जैक्टली ये इसमें क्या पूछा था, लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट कॉमन सबसेक्वेंस। इस बार हमको लेंथ नहीं प्रिंट करनी, इस बार एक्चुअल में लॉन्गेस्ट कॉमन सबसेक्वेंस प्रिंट करनी है। अगर मैं पहले कहता एलसीएस में लेंथ प्रिंट करानी थी तो सेम क्वेश्चन है, एलसीएस पूछ रहा है, इनपुट फॉर्मेट देखो, पहले वाले इनपुट फॉर्मेट दो स्ट्रिंग रखी थी, लॉन्गेस्ट कॉमन की लेंथ निकाली थी। इस बार क्या प्रिंट कराना है अपने को, इसमें भी दो स्ट्रिंग रखी हैं और दोनों स्ट्रिंग में से एलसीएस निकालना है। पर इस बार क्या एलसीएस की लेंथ प्रिंट करानी थी पहले, और इस बार अभी एलसीएस एक्चुअल में एलसीएस ही प्रिंट करानी है। बेसिकली ये पहले है, ये अभी का इनपुट और इसका फॉर्मेट दिखा जाए तो इनपुट फॉर्मेट क्या है, सेम है, दो स्ट्रिंग रखी थी पहले भी अभी भी। पर अभी यहाँ तीन चीजों में से ये तीन चीजें चेक करते हैं पैन क्वेश्चन निकालने के लिए। बेसिकली पहला क्या इनपुट क्या है, क्वेश्चन में पूछ क्या है, और फिर आउटपुट क्या है। सॉरी, पहले देखते हैं इनपुट क्या है एलसीएस, फिर हम देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है, फिर अपन आउटपुट क्या पूछ रहा है। ये तीन चीजें चेक करते हैं। इनपुट तो पहले दो इनपुट ऐसे करके एक स्ट्रिंग यहाँ पर भी रखे हैं, पूछ एलसीएस रहा था पहले भी, अभी ऐसे पूछ रहा है। इधर आउटपुट में इंट मांग रहा है, पहले आउटपुट में स्ट्रिंग मांग रहा था। तो अगर इसमें से 2/3 भी मैच कर रहा है ना, सेम पैरेंट क्वेश्चन है, तो इसका पैरेंट क्वेश्चन क्या है, एलसीएस। सो इसमें दो चीजें फीचर मैच कर रहे हैं। तो इनपुट फॉर्मेट से ये दो स्ट्रिंग रखी थी, दो स्ट्रिंग अभी रखी, पूछ एलसीएस रहा था अभी भी ऐसे पूछ रहा है। इनपुट और क्वेश्चन अपना मैच कर रहा है, आउटपुट इस बार देना है। इस बार एलसीएस वर्क कैसे करता है, हाउ एग्जैक्टली एलसीएस वर्क, ए सी बी सी एफ और ए बी सी डी ए एफ 1। सो एम क्या है 6 + 1 = 7, सो एल बनेगा टी 6,7 का, ठीक है। तो मेरे को 6 रो बनानी है, बेसिकली मेरे को 6 रो बनानी है, 3 4 5 6 ऐसे 7 बनानी है। Oh, this one I can do it, bro. Here we need to store the string and we have to row by row we have to process it, so it's easy. We can store a string. Man, but I want to use memoization then. तो साइज 1 क्या है, ए में ए, तो यहाँ स्ट्रिंग ए है, और यहाँ पर साइज 1 में यहाँ स्ट्रिंग क्या है, यहाँ पर भी ए है। साइज 2 में स्ट्रिंग क्या है, ए सी, तो बेसिकली साइज 2 में स्ट्रिंग है ए सी, तो ए अपन लिख चुके हैं, मतलब यहाँ पर अगर है तो अपन यहाँ से इससे ऊपर तक की पूरी स्ट्रिंग कंसीडर करेंगे। 3 में क्या है बी, तो यहाँ पर अगर है तो खाली बी कंसीडर करेंगे, ऊपर वाली पूरी स्ट्रिंग ए सी और बी। फिर अपन यहाँ पर ऐसे सिमिलरली सी और एफ, यहाँ पर भी लिख लेते हैं बी सी डी ए और एफ, राइट। जैसे सी पे है तो सी यहाँ 0 टी ए, अपने को कुछ भरनी होती है, अपने को ये वाला ब्लॉक करना है। तो ये टी आई कॉमा जे अपन कैसे भरते हैं, अपन चेक करते हैं, कैसे करते हैं अपन चेक करते हैं कि a का i - 1 = b का j - 1 के बराबर है कि नहीं, राइट। सो अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ इंडेक्स क्या है 1, टी आई कॉमा 1, यहाँ पर क्या निकाला टी 1 कॉमा 1। तो बेसिकली हमको क्या चेक करना है, a का इंडेक्स 0 और b का इंडेक्स 0, a का इंडेक्स 0 जो कि a है, b का इंडेक्स 0 जो कि b है। बेसिकली हमने यहाँ पर लिखा है वो सही लिखा है। तो इंडेक्स यहाँ पर इसका इंडेक्स 0 है, ये 1 है, ये 2, ये 3, ये 4, तो एक इंडेक्स कम लिखा है। तो बेसिकली हमने यहाँ पर तो अपने को ये वाला और ये वाला चेक करना है, राइट। ये बात समझ आ गई, टी 1 कॉमा 1 अपने को करना है, तो इसके लिए इंडेक्स चेक करना है i - 1 j - 1, तो अपने खुद ही इंडेक्स बढ़ा के लिखा है यहाँ पर। तो यहाँ 1 पे जो इंडेक्स है वो b 0 है, और यहाँ पर जो इंडेक्स है वो a ऑफ 0 है। ऐसे अगर मैं बोलूँ यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पर कौन सा इंडेक्स है, तो यहाँ पर d ऑफ 3 इंडेक्स है, 4 पे कम का इंडेक्स है, ऐसे यहाँ पर, ठीक है। ऐसे अगर अपन ये वाला लेंगे तो अपन पीछे ये वाला यहाँ पर लेटर देखेंगे a, और यहाँ पर लेटर देखेंगे अगर a है, अगर मैच कर रहा है तो अपन ये वाली वैल्यू, जो ये वाली वैल्यू है लेट्स से 2 है, तो 2 + 1 करके लिखेंगे 3, और यहाँ पर a है और यहाँ b है, ये मैच नहीं कर रहे हैं दोनों लेटर जो अपन, राइट। तो मैं टेबल जल्दी से समझ a b c 0 0 ये वाला ब्लॉक करना है। ये वाला ब्लॉक करने की क्या लिखेंगे हम लोग, रिजल्ट और टेबल देखोगे जो पैटर्न है एलसीएस को, राइट, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या करा, अभी तक हमने कुछ भी नहीं करा, मैंने खाली एलसीएस का कोड लिखा, मैंने ये टेबल पे डाल लिया। एकदम लास्ट कॉलम से चलूंगा यहाँ से, ठीक है। यहाँ पर अपने आंसर देता ना, मैं यहीं से चलूंगा, ठीक है। चलना स्टार्ट करूंगा यहाँ से, और फिर मैं वैल्यू चेक करूंगा कौन सी पता है, मैं वैल्यू चेक करूंगा, मैं देखूंगा क्या ये वाली और ये इक्वल है,
क्या ये और ये इक्वल है, ठीक है। अगर ये और ये इक्वल हुआ तो बेसिकली अपन इसको ऐड कर देंगे अपने लॉन्गेस्ट कॉमन सबस्क्रिप्शन, तो मेरे को f तो मिलेगा ही मिलेगा, मेरे को इतना पता है तो f मिलेगा, ठीक है। अब ये इक्वल हो तो अपन कहां से आएंगे, मतलब आपको ये भरना है, लेट्स से अभी भरा नहीं है, तो अभी अपन ये देख रहे हैं f और f इक्वल है, तो बेसिकली अपन f और इक्वल है तो अपन क्या करते हैं यहाँ से यहाँ आते हैं प्लस 1 करते हैं, तो 3 + 1 क्या होगा 4 आएगा, तो अपन ने देखा ये इक्वल है तो अपन ने ये भरा, तो अपन यहाँ से आएंगे, राइट। तो अपन यहाँ पर आ गए, यहाँ पर आ गए, फिर अपन ने चेक करा कि ये और ये इक्वल है, तो मैंने कहा ये इक्वल नहीं है, तो अब ये जब इक्वल नहीं होते तो अपन क्या करते हैं, जैसे ये भी भरा नहीं है, तो अभी अगर भरा नहीं है तो अभी अपने को उसको भरना हो तो अपन कैसे भरते हैं, सी और ए चेक करते हैं, राइट। सी और ए चेक कर रहे हैं तो इक्वल नहीं है तो अपन क्या करते हैं, इसमें से और इसमें से जो भी मैक्सिमम होता है उसको सेलेक्ट करते हैं, इसमें से और इसमें से 3 और 2, 3 और 2 में से चेक करेंगे जो भी मैक्सिमम है और वहां से आएंगे, राइट। तो अपन देखा 3 और 2 में से मैक्सिमम कौन सा 3 है, तो अपन यहाँ से आएंगे, राइट। फिर 3 पे आ गए तो 3 पर अपने चेक करा सी और डी इक्वल है नहीं, तो अपन कैसे आएंगे, इन दोनों से मैक्सिमम चेक करके, मैक्सिमम क्या है 3 है, अपन 3 पे आ गए, राइट। फिर अपन देखा सी और सी इक्वल है, इसका यहाँ पर यहाँ पर आ गए सी और सी चेक किया इक्वल है, और इक्वल तो अपन कहां से आएंगे, यहाँ से आएंगे, तो मैं बनाया भी 2 से आएंगे, क्योंकि इक्वल होता है तो क्या होता है i - 1 j - 1 + 1 होता है, राइट। तो अगर ये भरा नहीं है तो मानो अपने को ये भरना है वाला ब्लॉक, तो अपन सी और सी देखेंगे इक्वल है तो अपन ये प्लस 1 करते हैं, तो अपन यहाँ से आएंगे, राइट। तो अपन यहाँ से आए, अब यहाँ पे बी और बी इक्वल है, मतलब अपन यहाँ से आए, अब यहाँ पे आगे सी और ए देखा, सी और ए इक्वल नहीं है तो मतलब कहां जाएंगे, इन दोनों में से मैक्सिमम, इसमें से या फिर इसमें से, इन दोनों में से 0 और 1 में से जो मैक्सिमम है वहां से आएंगे, तो मैक्सिमम क्या 1 है, तो अपन इधर आ गए। फिर अपन देखा ए और ए इक्वल है, राइट, ए इक्वल है तो अपन कहां से आएंगे, यहाँ से आएंगे, तो अपन यहाँ पर आ गए, और एक बार अपन यहाँ पे 0,0 हिट कर देंगे, कोई सा भी 0 तो अपन स्टॉप हो जाएंगे। अब बेसिकली तुम देखो मैंने यहाँ पे चेक करा क्या 4 ये इक्वल है, हाँ ये इक्वल है, तो मैंने f को ऐड कर दिया, फिर मैंने देखा ये इक्वल है, सी और ए इक्वल नहीं है तो मैं मैक्सिमम की तरफ आ गया, मैंने देखा क्या सी और डी इक्वल है तो मैंने देखा नहीं है, मैक्सिमम की तरफ आ गया, और फिर मैंने देखा कि सी और सी इक्वल है, अगर इक्वल है तो मैंने फिर इसको ऐड कर दिया, फिर मैंने देखा आगे बढ़ गया, इधर आ गया, मैंने देखा बी और बी इक्वल है क्या, बी और बी इक्वल है, हाँ तो मैंने इसको भी ऐड कर दिया, इधर आ गया, देखा सी और ए इक्वल है नहीं तो मैं मैक्सिमम की तरफ आ गया, मेरा ए और ए इक्वल है तो मैं ए की तरफ आ गया, तो मेरी लॉन्गेस्ट कॉमन हो गई सीक्वेंस, राइट। मैंने ये प्रिंट करा दिया, बेसिकली ये क्या है, ये जो अपनी लॉन्गेस्ट कॉमन सीक्वेंस आई थी ए बी सी एफ उसका रिवर्स है, मैं जब ये एक्सप्लोर कर लूंगा और मैं उसका रिवर्स करा दूं तो मेरे को क्या प्रिंट हो जाएगी, एलसीएस प्रिंट हो जाएगी। ये कौन समझ आ गया तुम्हें, देखो क्या बोला मैंने कि मैं धीरे धीरे यहाँ से लास्ट से जाऊंगा, मैं चेक करूंगा अगर इक्वल है तो मैं ऐड करता जाऊंगा, ठीक है, अगर इक्वल नहीं है सी और ए इक्वल नहीं है तो मैं मैक्सिमम तरफ मूव कर जाऊंगा, मैक्सिमम तरफ मूव कर जाऊंगा, जहाँ पर सी और सी से यहाँ पर इक्वल आ रहा है इक्वल तो मैं इसको ऐड भी कर दूंगा फिर मूव करूंगा, ठीक है। अगर मूव कैसे करना समझ आ गया कि अगर ये दोनों इक्वल है तो अपन, अगर ये दोनों इक्वल है जैसे ये और ये इक्वल है तो अपन काम मूव कर रहे हैं आई, जे से, अगर इक्वल आता है इफ इक्वल आ गया तो आई, जे से काम मूव कर रहे हैं आई माइनस पे जे माइनस अपन यहाँ मूव कर रहे हैं, राइट। और अगर नॉट इक्वल है, और अगर नॉट इक्वल है तो आई, जे से काम मूव कर रहे हैं जो भी मैक्सिमम है किसमें से, ये क्या आई -1 और जे, तो आई जे -1, राइट, ये क्या आई जे -1 और ये कौन सा है आई -1 जे, तो इन दोनों में जो भी मैक्सिमम वैल्यू है जिस पे जिस ब्लॉक का मैक्सिमम वैल्यू तो इस वाले ब्लॉक पर जाएंगे और इस वाले ब्लॉक का वैल्यू तो इस वाले ब्लॉक पर जाएंगे, सिंपल सा कोड है। तो बेसिकली यही कोड लिखना है और मेरे पास एलसीएस और जहां पर इक्वल है वहां पर एलसीएस स्टोर करते जाना है, इतना समझ में आ गया, ठीक है। तो मैं इसका कोड लिखता हूं, अब बेसिकली इसका कोड लिखना क्या है, इसका कोड बहुत इजी है, एक बार कोई कंसेप्ट समझ आ जाए और एक बार कोई कंसेप्ट समझ आ जाए तो कोड लिखना कोई बड़ी बात कोई कठिन बात नहीं है। इनका क्या मैंने एक लिखा है कि मैं वाला स्टार्ट करूंगा m कॉमन से, तो मैंने दो वैल्यू बनाया int i = m, दूसरा वैल्यू बनाया int j = m, राइट। Oh, I'll write the code. That's not the problem, but I want to solve it using. Oh, he published this video 6 years back. Thanks, man. Okay. Still, I have same doubt. Like, okay, so I think my approach that I was thinking is very bad. Because I have to calculate length, and length could be bigger, man. What are the constraints? Yeah, 10 to the power 3. Every time you are calculating 10 to the power 3, that's very bad. Okay, so okay, let me ask. This is the one I can do, bro. I want to see. Hey everyone, welcome back to Take You Forward. So in the previous video, we did solve the LCS. We did. Now what if I change the question? The question, to do it in an optimized way. I think we can. And BDGEK, okay? And let's do one thing. Let's simply print in our iPad and then I'll be explaining you. Okay, so this is how the DP array looks like. We did print it. And we know this is... Everyone is solved.
Okay. One thing I can do, first to use recursion to fill the dictionary, fill the table, and then start printing similar to the above one. But that would be not. It's like you are doing twice. Still there, you are doing twice, but no man, it's not the right approach. Chat GPT, I will ask. How to solve um, print LCS using recursion with memoization. Store actually a string in the memoization instead of so I was trying to build the second approach. Oh, we are creating a dictionary. Bad, very bad, bro. Got it. So first let's try. Then why would I try second approach? I will go with second approach directly. Okay. Okay, now the thing is like I cannot use previous and current because the problem is no problem. Table for -1 for underscore in a range, and I'll say n+1 underscore in range m+1 m rows and columns. So first one will be when we have length 0, then we'll get 0. I will do one thing. I will keep everything 0. I don't need to write base case then,
and for I in a range I will start filling from 1 to m plus 1, and for j in range 1 to n plus 1, 0 length of any. Okay, then if s1 of I minus 1 equals to s2 of j minus 1, then then table of I and j is nothing but 1 plus table of I minus 1 and j minus 1, else there will be op1 is nothing but where you are keeping, what you are doing. Option 1 means you are shortening the length of 1, so string 1 I minus 1 and keeping the length of j same. Option 2 is table of I keeping the first string intact and second you are reducing the length. So result is max of op1 op2, and finally you will say return, no not return, table I and j, basically store the result. Bro, looks everything great. Now what else we need to do? I will print first, print table. Ooh. Oh, why did you do, bro? Keep it and it looks good. Okay, that is the output they want to return something. Let's do it complete first. Print the string. So now I have to do it. So I can start from the beginning I saw in the code. So because the same operations for I. Okay, first I'll do result is nothing but this for I in a range first 0 length, that does not matter, so I will start from 1 to m plus 1 for j in a range 1 to n plus 1. S1 of I equals to S2 of j minus 1 I minus 1. That means this character is matching. If it is matching, then result equals to S1 of I minus 1 plus result, you will say. Okay,
else there are two options. If I'll use for loop, it will gonna start from each. I don't need for loop. I need I equals to 0, I equals to 1, j equals to 1, and while I less than m, j less than n. You will say if al if s1. Oh, okay. I mean table of. There are two options. Now you have diagonal. You will say bottom one. So oh, my bad. Table result. What are you did? What you did, bro? Result, whatever you are getting, plus this you are doing result plus. Okay, past one, and you are adding, and you have to do this as well. I. So now you are moving. You completed this one. Move diagonally. I plus 1, j plus 1, because this one is matching. That means you are advancing both the values, I plus 1, j plus 1. Yeah. Here if table of I, okay, else I will use two options. If table of I minus 1, not I plus 1, and j will remain same, is greater than equals to table of I will remain same, I j plus 1, then I equals to I plus 1, j remains same, else j equals to j plus 1. A, B, B. Okay, A, B. No. Double B's will be there. Triple A. So the answer should be. What is desired output?
table is something like, okay, here I can see 0 0 0. They are not showing correct this is bad, bro. S1 of I minus 1 S2 of J minus 1 equal. I will start from first element, or you can say I minus 1 J minus 1. Okay, good. Yeah, then result I can move diagonally. You'll check if this is matching. If not, then you will move again to one of the side, like either top or right, not top right, down right, and diagonal. You have three options to decide. Table I plus 1J. Will it reach to the end? I have one doubt.
A B C A B C B A B. Bro, now I wanted to solve it. Let me draw matrix. What is the length of it? 2, 2, 4, 1, 5. M equals to 5 and N equals to 4. So there will be 5 columns. 3, 4, 5. Okay. Two, three, 1, 2, 3, 4, 6. So it will be 0, 1, 2, 3, 4. 0, 1, 2, 3, 4, 5. It will represent A B C B A B C B A B, and here it will represent A B C A B. Let's start filling. Starting when everything is 0, 0 will remain here. 0, 0, 0, 0, 0. Let me fill from here. So at 1, both are not equal, A and C. Okay. If A and C are not equal, then you will say get the result from this side and this side, and whichever is the max, just take that. So this one both are 0, so it will be 0. Now here you will say check for B and A, AB. You will say A, B both are not matching, so check the result for this and this diagonal element. So you will say 0. Then you will say A, both are matching, and so you will say okay, it's matching. Then whatever the result that is for diagonal, not diagonal, my bad. Okay, so you have to say it like this. Now find the previous one, I minus 1 j minus 1, and whatever the plus 1, so 1 it will be. Okay, now you will say here A and B both are not matching, so you will say okay, whatever the value is there, max get off diagonal, so 1, it will be max of these two. Okay, I'm not I mean, yeah, this one and this one will be for here. It was like both are matching, so you will say this one. For this one, when both are not matching, then you will say diagonal, just provide me this one. Okay, now let me jump and say, so okay, here to B and C not matching, B and C not matching, so diagonal 0. B and C, and B matching, so you will say this previous one and 1, this will be 1. Now B and A, you will say not matching, then what is the maximum of diagonal? You will say 1. B and B matching, so you will say maximum diagonal plus this 2. Then you will say C and C matching, so it will be 1 plus diagonal, so C and B not matching, so you will say max of diagonals. What else should I say? Top, you can say top one and left one, top and left, so max will be 1. Now C and A not matching, so you will say not matching, then this one, so top and left 1. Then you will say C and B not matching, then top and left 2. Then you will say A and C not matching, then it will be top and left 1.
A and B not matching, then top this one, A and A not matching, so you will say diagonal and 1 2. Here you will say A and B not matching, so diagonal, max of diagonal plus diagonal only 2. Then you will say B and C not matching, so simply diagonal max. B and B matching, so you will say max previous and 1 2. B and A matching, not matching, so you will say diagonal max 2. B and B not matching, a matching, so you will say this one and plus 1 3. So bro, we'll get 3. And it is BAB. Perfect. But now if I'll start driving from here, let me use another color. Yeah, I will use not like this. And it color choosing option, I will use this. So we have something from here. We need to start and we need to diagonal. So first, C, A and C not matching, so you will say what? You have two options, decide. Either you have to go this direction or this direction. So what you will choose? You will say no problem, I will go in this direction, okay, or in this direction. You can take anyone. So here I am assuming what I was taking. Okay, greater than equals to, then I was going down. So I will move downwards direction. Then again here I'm checking B and C matching. It will say no, B and C, I and J are not matching. So now you have two options, go towards right or go towards down. So we have, again as per logic, we are going down. Now you will say C and C matching, so you will say now I can go diagonally and I will store this C. So you will say C will be part of result. C will be part of result and you will say no problem. Then you will go this diagonal and you will compare A and B not matching. Then you have two options to go down. Then you will say you are here. And B matching. Now you cannot go further down, right? So there is a problem. I will store B as well, but it will end the loop. C and okay, one thing. A and C not matching, so I went down. B and C not matching, then I went down. C and C matching, then I moved diagonal.
A and B not matching, then I went down. Actually, always I took. It's bad. Not worked. Failed. Logic. So, how much time I spent, bro? 1 hour just to solve this problem. Dun, 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 dun. I mean, just. Dun, 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 dun. Hey, your face is not visible, bro. And just. And literally, yeah. Dun, 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 dun. Hey, your face is not visible, bro. And just. Now I think. Literally, yeah. Dun, 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 dun. God, I want to solve this. Hey, your face is not visible, bro. By the way, I need to watch the video again or what? ये दो वेरिएबल होंगे int I इक्वल टू m int j इक्वल टू m दो वेरिएबल हैं फिर मैंने बोला कि मैं तो करना चाहिए यहाँ पर नहीं आता इस लास्ट या तो यहाँ वाली कॉलम पे हिट नहीं कर जाता मैं या तो यहाँ वाले रो पे नहीं हिट करता मतलब क्या अगर इस वाले रो पे हिट कर गया मतलब क्या है एक स्ट्रिंग एम्प्टी हो गया राइट एक स्ट्रिंग एम्प्टी हो गया और सारे कॉलम पे हिट करके मतलब दूसरी स्ट्रिंग एम्प्टी हो गई तो आगे जाने की जरूरत नहीं कोई एक स्ट्रिंग तक एम्प्टी नहीं आती इस वाले रो में क्या होता है 5 है मतलब ये वाली एक स्ट्रिंग एम्प्टी है और इस वाले रो में क्या है कि यहाँ ये 20 स्ट्रिंग एम्प्टी है जब तक यहाँ नहीं पहुंचा तो यहाँ नहीं पहुंचा तो मैं बोला भाई कि यहाँ पर है लोग i j हम लोग यहाँ पर तो हम लोग क्या देख रहे हैं ये देख रहे हैं ठीक है तो कंपेयर करना है if a of i minus 1 is equal to b of j minus 1 है क्या तो समझ नहीं आ रहा चलो ठीक है मैं देखते रहेंगे तो अभी क्या है मैं इसको देख रहा हूं कंपेयर करके कि मैं यहाँ बनाता हूं डायग्राम ये यहाँ पर यहाँ मूव करना पहले इस स्ट्रिंग में कुछ बैक होता है वेक्टर में होता है स्ट्रिंग में होता है ना ठीक है तो मैंने इसको इधर डाल दिया मेरे को मूव करना था i j i माइनस j माइनस करना है मैंने i माइनस करके j माइनस किया ठीक है फिर मैंने एल्स अगर इक्वल नहीं है जैसे कि हम यहाँ पर थे यहाँ पर आए यहाँ पर लोगों ने देखा इस वाले केस में ठीक है हम लोगों ने इसका ये चक्कर a i माइनस 1 चक्कर जो कि क्या है c और यहाँ पर इसका b j माइनस 1 चक्कर जो कि क्या है a सो c और a इक्वल नहीं है सो a i माइनस 1 b j माइनस 1 इक्वल नहीं है तो अपन s कंडीशन में आ जाएंगे इसके s कंडीशन में आ गए s कंडीशन में क्या करते हैं अपन इसको ऐड भी नहीं करते यहाँ पर इसको ऐड भी नहीं करते ऐड करते हैं जब इक्वल आता है राइट और फिर अपन मूव करते हैं जो इसमें से और इसमें से जो भी मैक्सिमम होता है ठीक है तो बेसिकली ये इंडेक्स क्या इंडेक्स है ये इंडेक्स है एक इंडेक्स है i माइनस 1 j और एक इंडेक्स है i j माइनस 1 तो अपन इन दोनों में जो भी इंडेक्स पे ब्लॉक में जो ग्रेटर मैक्सिमम एलिमेंट होगा उस पर मूव करते हैं तो वही बना लेंगे एल्स इफ t of i सॉरी t है ना ये नहीं t इज ग्रेटर देन t of i माइनस 1 j अगर ये ग्रेटर है मतलब अगर फर्स्ट वाले ब्लॉक पे आ गए और ये i j है तो ये इंडेक्स i माइनस 1 j और ये इंडेक्स i j माइनस 1 तो मैं बोला अगर ये वाला इंडेक्स अगर ये i j माइनस 1 ये वाला इंडेक्स अगर ये ग्रेटर है इससे तो किधर मूव कर जाओ इधर मूव कर जाओ राइट मैं ऐसे बोल रहा हूं तो j माइनस माइनस कर दो i को तो यही रहेगा j माइनस माइनस इसका इंडेक्स i j माइनस माइनस एल्स एस का मूव कर जाओ एस यहां पर आ जाओ तो यहां पर i माइनस माइनस करना पड़ेगा राइट समझ में आ गया क्या करना है मैंने बोला कि अगर यहाँ पे ये इक्वल है f और f इक्वल आ रहा है सही है f को डाल दो और फिर i माइनस माइनस और j माइनस माइनस इस वाले ब्लॉक पे आ जाओ इस वाले ब्लॉक पे आ गए इस वाले ब्लॉक पे ये वाला एलिमेंट चेक किया ये इक्वल नहीं है मान लो इक्वल नहीं तो s में आ गया अभी कहां जाना है मैक्सिमम में जाना है तो अपन यहाँ पे कौन सा i j माइनस 1 यहाँ i माइनस 1 j है जो सभी मैक्सिमम अगर i j माइनस 1 ये i j माइनस 1 अगर ये मैक्सिमम है तो अपन यहाँ पर आ जाएंगे और j माइनस माइनस कर देंगे इंडेक्स यहाँ पर आने के लिए और अगर यहाँ पर आना है तो यहाँ पर आ जाएंगे यहाँ पर आने के लिए i माइनस माइनस कर देंगे तो बेसिकली इतना सा कोड है ये कोड होगा तो आखिर में ये स्ट्रिंग में ये जो स्ट्रिंग बना देना इस स्ट्रिंग में अपने पास ये स्टोर हो जाएगा एलसीएस और इस स्ट्रिंग को आखिर में रिवर्स कर देना रिवर्स फंक्शन लगा देना स्ट्रिंग s डॉट बिगिन और s डॉट एंड होता है एंड होता है ठीक तो s डॉट बिगिन s डॉट एंड कर दिया तो बेसिकली ये स्ट्रिंग रिवर्स जाएगी आखिर में ये स्ट्रिंग रिटर्न कर देना तो ये स्ट्रिंग भी बन जाएगी लॉन्गेस्ट कॉमन सबसेट ठीक है सो मैं एक बार समझ कर लिखूंगा लॉन्गेस्ट कॉमन सबसेट ठीक है
what I'm doing? Just using it from top to bottom. Let me just see if it is the problem of top to bottom. I will be here, so I will start. Okay, B and B are equal, so B will be part of it, and then I'll say okay, no problem, this is the thing. I will move to this diagonal and I will say okay, A and A matching, then you will say A will be part of it, then you will say jump to this C and A B not matching, then you will say left top and this both are equal. Bro, if both are equal then we can move any direction, right? So if I'll move this direction, then it will be C and C. But what, so C and C matching, then C will be at part of it. But what if I'll move this direction? Then you'll say B and B matching. So you'll get B. So you can take BAB or you can take CAB. So both are acceptable. What was the problem if I'm taking top to down approach? First you considered this C. Then you move to here A and B. A and B not matching, so you will jump. You have two options, bottom and this. So you choose this. Suppose S1 of I minus 1 J minus 1. J minus 1 result plus. Okay, so we are getting the last. So it should be at the starting, right? J minus 1 is to 1, J minus equals to 1, else J I minus 1, J minus 1.
Now I have a doubt. This is not the doubt, bro. Just created thumbnail. Approach, top down approach. So you need to take, I'll ask it. I'm not when I'm using top down approach, firstly write correct spelling of approach. Then okay, when I'm using top down approach and filling a table, why I need to start from last to construct string. Got it little bit. What is time right now? 52 minutes. Man, I'm
print longest common substring. Let me try it first from my end. Given two string str1 str2, find the length of their longest common substring. A substring is a contiguous sequence of characters within a string. Within a string. So I'll say str1 is equals to a b c d e. str2 is equals to a b f c e. Now we need to find them. If I have to find out the LCS, then what I'll do, simply I will start from end and I will say okay, if matching then consider it. Now the thing is, okay, what needs to be found? Find the substring or just print length of max. Okay, let me close first this chat GPT. Okay. So there could be two scenarios. I mean, what I'm thinking. So it's not like blindly we can say okay, this is matching. That means it will be the part of length. No, it could be part of length or it could not be. How to decide it? Actually, it's pretty difficult to decide it. Here if you see DC is not matching, one thing is like you can say A B C D E and another one you can say A B F C. So now we find the maximum length of substring. Okay. Or it could be A B C D and A B F C E.
So this is one option where you are discarding this element and OP1. Guess length is 2, right? Okay, one thing I noticed. First thing is like if you both are matching, then it could be a part of substring. But you how would you know? So this is one length that you can get substring of 1, or you will say okay, I'm just excluding this, including this could be part of 1. I mean, there are two options. One is this is on itself is a substring. Option 2, uh, consider this okay, I'll do the two things. If not matching, then that means whatever you will say A B C D E A B F C or this is okay part. That means this cannot be part of it at all as a substring. Either you have to consider this or this, because both cannot be part. But if both are equal, then how would I decide? If I will give A B C D, then whatever we'll get, I think one is possible that you will consider this only itself is a substring. If one length, here will be two options. And it is also possible, let's say A B C D E. Okay, let's say there is E and E. A B C E.
Now, okay, let's say PQ RS. Now if we'll consider this and this, then simply we are getting 1. Or there is another option, you can say either you consider 1 or like this one. So these are the two options. But bro, how can I connect it when I'm passing back to this? A B C D. What is time? 12:29 p.m. So n equals to m minus 1 is to m n minus 1. Both are equal. First thing for sure, that is this is one option where you will say great, just explore other options and provide me max. Oh, bro. I mean, I need time to think about it. I'm not getting what exactly I do. Let me take time. I'll be back, and I need to think more on it before I jump into the video. Thanks, and yeah, I'll see you in the next stream. Bye bye. Take care.